Namaste and welcome to learning. In today's video, we're diving into one of the most essential aspects of our lives, communication. We'll be exploring its fundamentals, discussing the need, purpose, and nature of communication, and why it's so crucial in every part of life. So let's just dive in and get started. Now, as discussed in the previous video, communication is the process of sharing information, thoughts, ideas, and feelings between individuals or groups, ensuring that the intended message is accurately received and understood by the recipient. In simple words, संचार का मतलब है व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी, विचार और भावनाओं को साझा करना, ताकि जो संदेश भेजा गया है वह ठीक से समझ में आ सके और सही तरीके से प्राप्त हो सके. Before we dive into the details, let's take a quick look at what we'll cover in today's video on communication. First, we'll discuss the need for communication. संचार व्यक्तियों और संगठनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? Next, we'll explore the purpose of communication. संचार के जरिए हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों को समझना. And finally, we'll go over the nature of communication. संचार किस तरह काम करता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझना. Now, let's dive into the need for communication. This refers to the fundamental reasons why communication is essential across different parts of our lives. Communication isn't just about exchanging words or information, it fulfills some core needs that help us navigate through various situations. These needs can be grouped into three major categories: practical, social, and psychological needs. First, we have practical needs, which address the functional role of communication in our daily lives. Practical needs help us with information exchange, decision-making, problem-solving, and coordination. व्यवहारिक आवश्यकताएं हमें सूचना का आदान प्रदान, निर्णय लेना, समस्या समाधान और समन्वय में मदद करती हैं. For example, in a workplace setting, communication allows team members to share information, make decisions together, and coordinate tasks efficiently. Without communication, it would be challenging to achieve common goals or address issues as they arise. Next, we have social needs. Communication is essential for building and maintaining relationships, social interaction, and cultural exchange. सामाजिक आवश्यकताएं हमें रिश्ते बनाना और बनाए रखना, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद करती हैं. Through communication, we create bonds with family, friends, and colleagues, share experiences, and understand each other's perspectives. It also allows us to engage in cultural exchanges that enrich our understanding of the world and connect us to others on a deeper level. Finally, we have psychological needs, which include the expression of feelings, motivation, and conflict resolution. मानसिक आवश्यकताएं हमें भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रेरणा और संघर्ष समाधान में मदद करती हैं. Expressing our emotions and thoughts helps reduce stress and enhances our mental well-being. Communication allows us to receive encouragement, stay motivated, and resolve conflicts, making it easier to navigate challenges and build resilience. Now let's discuss the purpose of communication. This refers to the specific objectives or goals that communication aims to achieve. It focuses on the intended outcomes of the communication process. संचार के उद्देश्य उन विशिष्ट उद्देश्यों को दर्शाता है जिन्हें संचार के जरिए हासिल करना होता है और यह संचार के परिणामों पर ध्यान देता है. There are 5 main types of communication purposes, each serving a unique role in how we connect with others and achieve our goals. Let's go over each one. First, we have the informative purpose. This involves sharing knowledge and information to keep others informed. सूचनात्मक उद्देश्य का मतलब है ज्ञान और जानकारी साझा करना ताकि लोग सूचित रहें. For instance, when teachers or leaders communicate important updates, they're fulfilling an informative purpose.
Next is the persuasive purpose, which is all about influencing opinions and behaviors. प्रेरक उद्देश्य राय और व्यवहार को प्रभावित करने पर केंद्रित होता है. This is often seen when a marketer communicates to persuade customers to buy a product, or when leaders persuade us to vote for them. The relational purpose focuses on building and maintaining relationships. संबंधपरक उद्देश्य का लक्ष्य संबंध बनाना और बनाए रखना होता है. Communication that fosters trust, respect, and understanding is essential for strong relationships. The motivational purpose involves encouraging and inspiring action. प्रेरक उद्देश्य का मतलब है लोगों को उत्साहित करना और उन्हें प्रेरित करना. For instance, a motivational speaker or a coach uses communication to inspire and energize people to take positive steps. Lastly, the instructional purpose is focused on teaching and guiding others. अनुदेशात्मक उद्देश्य का मतलब दूसरों को शिक्षा देना और मार्गदर्शन करना है. It includes providing clear instructions, explanations, and guidance to help people learn or complete tasks. So, these 5 purposes, informative, persuasive, relational, motivational, and instructional, illustrate how communication can serve different goals depending on the situation and desired outcomes. Now, let's explore the nature of communication. This concept refers to the characteristics and principles that define how communication operates. संचार की प्रकृति उन विशेषताओं और सिद्धांतों को दर्शाती है जो इसके काम करने के तरीके को परिभाषित करते हैं. These attributes help us understand the dynamics of communication and how it functions in various contexts. First, communication is a dynamic process. It's continuously evolving and changing based on context, people involved, and other factors. संचार एक गतिशील प्रक्रिया है. यह निरंतर विकसित और परिवर्तित होती रहती है, जो स्थिति, इसमें शामिल लोगों और अन्य कारकों पर निर्भर करती है. For example, a conversation may change direction as new information is shared. Communication is also interactive. It requires an exchange between a sender and a receiver, and feedback is a key part of this process. संचार परस्पर आदान प्रदान वाला होता है. इसमें एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच आदान प्रदान शामिल होता है, और इसमें प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Communication is contextual, meaning it is influenced by the environment and situation in which it occurs. संचार प्रासंगिक होता है, अर्थात यह उस वातावरण और स्थिति से प्रभावित होता है जिसमें ये होता है. For instance, formal communication in an office setting differs from casual communication with friends. Communication is also transactional, meaning both parties are actively involved as senders and receivers. In a conversation, we continuously send and receive messages, making communication a two-way process. संचार लेन-देन संबंधी भी है, जिसका अर्थ है कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं. बातचीत में, हम निरंतर संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं, जिससे संचार एक दो तरफा प्रक्रिया बन जाती है. Communication is symbolic. We use words, gestures, and expressions to convey meaning. This symbolism allows us to communicate complex ideas through simple signs and symbols. संचार प्रतीकात्मक है. हम अर्थ व्यक्त करने के लिए शब्दों, इशारों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं. ये प्रतीकात्मकता हमें सरल संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से जटिल विचारों को संप्रेषित करने की अनुमति देती है. Communication is complex, as it involves multiple elements like language, tone, context, and nonverbal cues. It's influenced by various factors, making it a layered and intricate process. संचार जटिल है क्योंकि इसमें भाषा, स्वर, संदर्भ और गैर मौखिक संकेत जैसे कई तत्व शामिल होते हैं. यह विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है,
जिससे यह एक परतदार और जटिल प्रक्रिया बन जाती है। Communication is irreversible. Once a message is shared, it cannot be taken back. This is why it's important to choose our words carefully, especially in sensitive situations. संचार अपरिवर्तनीय है। एक बार संदेश भेजे जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए, विशेष रूप से संवेदनशील परिस्थितियों में, हमें अपने शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। Communication is a continuous process. Every interaction builds on past communications and impacts future ones. संचार एक निरंतर प्रक्रिया है। हर संवाद पिछले संवाद पर आधारित होता है और भविष्य के संवाद को प्रभावित करता है। For example, positive past interactions can make future communication smoother and more open. Finally, communication is multi-channeled. It occurs through various channels, such as verbal, non-verbal, written, and visual, allowing us to convey messages in multiple ways simultaneously. संचार बहुमार्गीय होता है। यह मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य सहित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से होता है, जिससे हम कई तरीकों से एक साथ संदेश संप्रेषित कर सकते हैं। Let's recap the need, purpose, and nature of communication. Need for communication. This highlights the essential reasons and necessity of communication to meet practical, social, and psychological demands. ये संचार की व्यवहारिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और कारणों पर केंद्रित है। Purpose of communication. This focuses on the specific goals and outcomes that communication aims to achieve across different contexts, like informing, persuading, building relationships, motivating, or guiding. ये संचार के जरिए हासिल होने वाले खास उद्देश्यों और परिणामों पर जोर देता है। Nature of communication. This describes the fundamental characteristics and principles that define how communication operates and influences interactions, showcasing its dynamic, interactive, contextual, and complex qualities. ये संचार के काम करने के तरीके और उसके प्रभाव वाले मुख्य गुणों का वर्णन करता है। That's all for today's video. Thanks for watching. If you enjoyed this content, please like, share, and subscribe for more updates and lessons.